Hello students, in this video we are going to study about the exercise which is in the textbook for lesson number 4, that is primary economic activities for 12th standard HSC science as well as art students for geography subject. So let us start with the first question. Choose the correct option and complete the sentence. So the first question is gathering of various products from the forest for livelihood is mainly carried in. Now gathering is what? Collecting the roots, collecting the fruits from the forest. Okay, so such type of activity is basically carried out in equatorial evergreen forest. So that is the correct answer. Next question, ideal location of fish. Okay, which is the ideal location of fish? We all are aware that the fishes are always available at continental shelf. Okay, now the continental shelf should be shallow. Okay, this the seas which are shallow, which has a sun rays coming till them, then because of that a photosynthesis activity is carried out. There are growth of planktons in those particular place, and there should be a confluence of warm and cold current. So option B is the correct answer. Next question is primary economic activity is not related directly to latitudinal location. So which activity is not dependent or related to latitudinal location? So the answer is mining. Next question, characteristics of extensive commercial agriculture. So extensive commercial agriculture, first of all it is monoculture, only one crop. It requires lot of use of water. Next is tropical cereal production is also the right answer in the case of extensive commercial agricultural. Okay, now let us move for the complete the chain, that is question number 2. We have 3 columns A, B and C. You just have to compare and find out the answers. So the answers are as follows. Intensive subsistence agriculture is the rice. Rice is grown. After that, small size of farm is seen over here. Next is Pampas grassland region. So it is a commercial animal husbandry place because it is a grassland, so it is animal husbandry and it is seen in South America. Next is fishing. Fishing is carried out at bank, sea coast, okay, coastal area. So Dogger Bank is the answer for B, and it is found in Northeast Atlantic Ocean. Next is gathering. Gathering is most probably done in dense forest where the climate is totally unfavorable. Now the next question is write short notes on. So the first short note is plantation agriculture. So you have to write what type of agriculture is this. So plantation is extensive agriculture. You have large farm size. Only one crop is cultivated in whole farm size. Hence it is called as monoculture. Okay. Care has to be taken to maintain the quality of the crop and use scientific methods. Machineries are used. Okay. Modern techniques are used and large amount of capital is invested. Okay, humans are involved, large amount of humans are also involved, and it once the crop is produced, it gives the yield for 10 to 15 years. Now which type of crops are seen? Tea, coffee, rubber, these are the crops which are seen over here. And which are the countries which perform plantation agriculture is Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, India. So these are the points which you have to mention. Next short note is on physical factors of fishing. Now which place in the ocean floor is most suitable, that you have to write, that is continental shelf. It is largely carried out at the commercial scale at the shores, at the beaches. Okay, so the broad continental shelf, shallow water is favorable where there are cold and warm currents. So Japan is the most important. Japan has the most wide coastal shelf, okay, and shallow water. So this is the broken coastal lines are also called as natural harbors and ports, which are used for fishing activities. So all these things are the points which you have to write, that the physical factors which are needed for the fishing activity. So fishing is most probably carried out in Japan, USA, Europe. Okay, you have to write this also. Next is lumbering.
Now lumbering is what? Cutting down of forest trees. Okay, so it is basically seen in the coniferous forest, which are very tall trees, which has a very tall tree, and only one species of a tree is found in coniferous forest. Now this type of trees are very soft. Okay, so it can be cut down easily, and it is used for furniture, it is used for paper making industries, okay, or pulp industries. So very good quality of softwood, such type of trees are preferred in the case of lumbering activity. Now these trees can be seen in the places like Canada, northwestern Europe, and Soviet Union. So these are the places where you can see lumbering on a large scale. Next short note is about hunting and loss of ecosystem. So the hunting is carried out in large amount of area. We all know that in a ecosystem, each and every plant and animal, there is a cycle, there is a dependency. If there is an hunting in large amount, definitely it is going to disturb the life cycle or ecosystem. So because of that, in various places or various countries, the commercial hunting is totally banned, because the humans as well as the animals and the plants, all of them are, they are dependent on each other. So yet there are so many tribal people, Adivasi peoples, those who are carrying out hunting in large scale. So such peoples are Eskimos in the tundra region, Pygmies of equatorial selvas, Bushmen of Khilari, and Sentinels in Andaman. So these are the people or tribal peoples. They don't have any other option, so they are still dependent on hunting. Now the next exercise is question number 4. Give geographical reasons. Okay, so the first is agriculture is done on large scale in India. Now why agriculture is done in large scale? First of all, India is a developing country. Okay, so large amount of population is still engaged in the agriculture. So near about 46% of population is engaged. The soil found in India at the plain surface like Gangetic plains, Krishna, Godavari, Mahanadi, Tapi, Narmada, all these plains have very fertile soil, black soil, which is very much suitable for agriculture. Okay, it also has the good amount of fertility and the capacity to be to give a maximum yield. Water bodies are available. Okay, so hence agriculture is done on large scale in India. Next is mining is developed in Chota Nagpur Plateau. Now, the minerals are always divided unevenly throughout the world. Okay, it is not present equally everywhere. So in Chota Nagpur, it is very much rich in minerals. Hence, the mining is developed more over there. Now, which type of minerals can be seen in Chota Nagpur Plateau? The minerals like iron ore, manganese, mica, copper, limestone. So, all these minerals can be seen. Okay, so the government has invested a lot of policies over there. Capital investment is done. Technologies are developed, and skilled laborers are also kept over there. Along with that, transportation facilities are also maintained. So, these types of developments are done for mining in Chota Nagpur Plateau in India. Next is lumbering is developed on a large scale in Canada. Now Canada is rich in coniferous forest. Okay, coniferous forest has a speciality or characteristic of softwood, which is basically used for lumbering purpose. Okay, so because of that, this wood these trees are having a very genuine climate which is needed to them. Okay, so they grow in such a favorable climate, and only one species of tree is grown in the whole forest. So these are very soft, which can be easily cut down. They can be molded into furnitures, they can be used in paper making industries. Okay, and lots of machineries and movement. Okay, so because of that, lumbering is developed on large scale in Canada. नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज़ अ कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. अभी एक्सटेंसिव की स्पेशलिटी क्या है? इट इज़ अ ग्रास लैंड एरिया जहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, साइज ऑफ फार्म बहुत ज़्यादा है, एंड ओनली फ्रॉम फ्यू 100 एकर्स टू 1000 एकर्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो एक्सटेंसिव मतलब क्या? ज़्यादा. Here you have large amount of yield, large amount of machineries are used, modern techniques, scientific methods are used here. Per hectare production is low, whereas per capita production is very much high.
सो दीज आर दी स्पेशलिटीज़. तो कहाँ पे नज़र आते हैं एक्सटेंसिव टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर? इट इज़ सीन स्टेपीज, पेरीज, डोव्स, पैम्पर्स, विल्ड ग्रासलैंड्स. ओके, so it is basically used for exporting, for foreign trading, hence it is a commercial type of agriculture. Next is lumbering is practiced more in coniferous region than in tropical region. अभी lumbering coniferous में क्यों देखी जाती है? Because coniferous has only one type of species of trees. तो वो जो trees होते हैं ना, that is very soft, okay, which can be easily cut down and durable भी होते हैं. Okay, so these in the coniferous forest, one type of species is seen and it is used. It is this type of wood can be easily transported and carried out from one place to another place. Okay, and they have large demand. This soft wood have a large demand in the international market. So because of that, it has a very high and different types of trees which grow in close proximity. So lumbering is difficult in the case of tropical region. ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन द सरफेस मूवमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, transportation facilities are also not available. The marshy land because of marshy land, the constructions of other modes of transportation is difficult. There is no local market available in the tropical region. Okay, so because of that, lumbering is not practiced more in tropical region. Next is hunting has been banned. Now hunting has been banned because there are so many species of animals which are totally extinct. They are not available now. Because of the wars of extinction, the hunting is banned. There are so many animals that they were present in history, but currently they are not present. So government has taken some strict action against it, and because of it, to conserve the remaining animals, the hunting has been banned in various countries. Now the next question is differentiate between. So differentiate between lumbering in equatorial forest and temperate region. So in equatorial forest it is a tropical evergreen forest, whereas in temperate forest it is a temperate coniferous forest. अभी इक्वेटोरियल में मिक्स्ड टाइप के ट्रीज आपको दिखाई देंगे, लेकिन टेम्परेट फॉरेस्ट में यू हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज ट्री. इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट द वुड इज वेरी हार्ड and in temperate forest the wood is soft. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है और टेम्परेट में क्लाइमेट कोल्ड और प्लेजेंट है. ठीक है, तो सरफेस मूवमेंट के लिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में डिफिकल्टीज आती है. यू डोंट हैव एक्सेसिबिलिटी मोर, बट इन द केस ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट द एक्सेसिबिलिटी इज गुड. ओके, mechanization is not possible for cutting trees in equatorial forest. Why? Because the wood is very hard. और टेम्परेट फॉरेस्ट में वुड जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो इट कैन बी ईजिली कट डाउन. एंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देर इज़ नो डिमांड फॉर लोकल मार्केट, whereas in temperate forest, as the wood is good, it has a great demand in the local market. Next difference is about plantation agriculture and extensive commercial agriculture. अभी plantation agriculture is developed in the tropical region and extensive commercial is developed in the temperate region. प्लांटेशन में लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है और एक्सटेंसिव में मशीनरीज आर यूज्ड इन मोर. प्लांटेशन की स्पेशलिटी है मोनोकल्चर, एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करना. और एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर इज व्हाट? इट इज ऑल्सो कमर्शियल, लाइक एनिमल रियरिंग इज ऑल्सो डन विद दी along with the extensive commercial agriculture. So examples of plants grown in plantation is tree, coffee, cacao, and examples in wheat. Extensive commercial agriculture is wheat, maize, rice. Okay, so this type of agriculture is practiced in Malaysia, India, Sri Lanka and Indonesia. That is plantation. Whereas extensive कहाँ देखी जाती है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. तो प्लांटेशन के जो क्रॉप्स होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉर फॉरेन पर्पस. एंड इवन दी एक्सटेंसिव कमर्शियल यील्ड इज मोर हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन, सो वो भी एक्सपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइनिंग एंड फिशिंग. अभी माइनिंग और फिशिंग दोनों भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, लेकिन इनके जो तरीके हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है. ठीक है, सो सिंस एंशियंट टाइम्स मैन इज़ यूजिंग मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल. सो माइनिंग में हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, और सिंस एंशियंट टाइम्स मैन इज़ कंज्यूमिंग फिश एज अ फूड.
अभी माइनिंग में नेचुरली इट इज़ फाउंड इन दी अर्थ क्रस्ट, ठीक है। और फिशिंग में आप नेचुरली फिशेस को देख सकते हैं रिवर्स या लेक्स और सीज में, और आप उनको कल्टीवेट और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ओके, मैन्युअली। देन इन द केस ऑफ माइनिंग, माइनिंग के जो प्रोडक्ट्स है हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। और इन द केस ऑफ फिशिंग, कि फ़िश का जो यूज़ है वो बेसिकली मेडिसिन्स या फिर फूड या फिर ऑयल्स ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिश वो सभी वाटर बॉडीज़ में आपको दिखाई देंगे, रिवर हो, लेक हो, सी हो, ओशन हो, जहाँ जाओगे वहाँ पे वो आपको मिलेंगे। Next is availability of mineral depends upon geological structure, whereas the availability of fish is depended on the coastline. How is the coastline, whether it is cold or warm, okay. So सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम फिशिंग के एक्टिविटीज़ सर्टन एरिया में दिखाई देते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. Now the next question is answer the following question. So the first question is what are the factors affecting commercial fishing? अभी कमर्शियल फिशिंग के लिए विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग? सो द फैक्टर्स लाइक एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेर एवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ प्रेजेंट देर इज़ अ शैलो वाटर, तो ईजीली सनरेज वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ओके. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इज कैरिड आउट, प्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, एंड व्हेन द प्लैंक्टन्स आर इंक्रीज्ड then the fishes come and visit there to eat it. Why? Because planktons are the food of fish, okay. So वहाँ पे cold और warm current का भी confluence होना बहुत ज़रूरी है. Basically large size of fish are seen in the case of continental shelf, okay. So even the cold climate is also necessary to preserve the fish, and the use of advanced technique for fishing, boats, nets are also used for commercial fishing, okay. There is large demand of sea fish, ocean fish in the market, and the examples are dogger bank fishing, which is seen in northeastern coastal of North America, okay. Now the next question is write a note on intensive subsistence agriculture. अभी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड लिमिटेड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज सीन एंड देर इज़ अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है. मतलब स्मॉल लैंड के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं और फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड होता है. सो फार्मर्स दे वर्क इंटेंसिवली टू गेट मैक्सिमम यील्ड आउट ऑफ स्मॉल लैंड. छोटे से ही एरिया में बहुत ज़्यादा यील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में दिखाई देगा. राइस एक बहुत कॉमन फ्रूट क्रॉप है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में दिखाई देता है. मोस्टली मैनुअल लेबर्स एंड एनिमल्स लाइक बुलक कार्ट्स, द काउस, बफेलोज, बुलक्स आर यूज्ड इन सच केसेस एंड द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड, ओके. तो उस फैमिली के लिए ही वो प्रोडक्ट जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है वो प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है. और इफ़ देर इज़ एनी रिमेनिंग सरप्लस देन दैट सरप्लस इज़ अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ओके. सो द यील्ड पर हेक्टर इज़ हाई बट द यील्ड पर कैपिटा इज़ लो इन द केस ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ओके. मतलब एरिया वाइज यील्ड ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इंसान, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन दैट एरिया, हाउ मेनी लेबर्स आर वर्किंग, इफ़ यू कंसिडर अकॉर्डिंग टू इट देन द पर कैपिटा इनकम इज लो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग. अभी मार्केट गार्डनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रक गार्डनिंग, उसका अलग नाम है ट्रक गार्डनिंग, ओके. सो यहाँ पे मार्केट गार्डनिंग की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको उस वहाँ पे दिखाई देंगे. सो साइज़ ऑफ द फार्म इज़ वेरी स्मॉल, ओके. गार्डन के जैसे ही साइज़ है. वहाँ पे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वो कल्टीवेट कर देते हैं. मैनुअल लेबर्स लगते हैं और जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो बहुत ही हाई होते हैं. यहाँ पे बेसिकली बहुत केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज मार्केट गार्डनिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ बेसिकली डन
टू एक्सपोर्ट। ओके, एक्सपोर्ट करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और वाई देर इज़ अ नीड ऑफ मार्केट गार्डनिंग, इट इज़ नीडेड बिकॉज सम एरियाज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो उनको अगर सफिशिएंट अमाउंट की कमोडिटीज़ सप्लाई की, मतलब you should give that much commodities as per the requirement. So such type of market gardening are seen in the rural urban fringe area to satisfy the needs of densely populated urban areas. तो examples यहाँ पे है वसई, विरार, these are the markets where which are seen in Mumbai. Next question is, write a note on the areas in the world practicing commercial animal husbandry. अभी commercial animal husbandry का भी एक extent है. So 30 degree north to 60 degree north और 30 degree south to 55 degree south, ये जो range है हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स है, तो इसी जगह पे एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देती है. ओके, सो विच आर द प्लेसेस विच कम्स इन दिस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट? द प्लेसेस लाइक रशिया, नॉर्थ अमेरिका, पेरिस, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ट्स इन साउथ अफ्रीका एंड पेम्पास प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना. ओके, तो यहाँ पे सारे ग्रासेस और स्मॉल स्मॉल bushes are seen which are consumed by the animals. Okay, बहुत ही pleasant environment होता है यहाँ पे. So in these areas the agriculture as well as the animal husbandry is done together, like meat production, milk production, dairy products, ये भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं. This type of farming needs huge capital investment and most use of modern machineries. In North America, it is carried out with the help of advanced technology on commercial scale. अगर ज़्यादा animals है, then you require a machinized technique. A humans cannot do all those things. So because of that, advanced technologies are also used in the case of animal husbandry. Next is mining is dependent on extraction of natural occurring minerals. अभी माइनिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत ही एंशियंट से माइनिंग इज़ कैरिड आउट. ओके, सो मैन के नॉट प्रोड्यूस मिनरल्स, वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, हम उसे बना नहीं सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन वॉट कि मिनरल्स नेचुरली कहाँ पे है, किस एरिया में है. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी presence of minerals. It also depends on geology of the region, value of minerals and quality of minerals, as well as capital investment, technology and availability of skilled laborers. Next is write in detail about the characteristics of primary economic activity. So hunting, gathering, fishing, rearing animals, mining and agriculture, these are all the primary economic activities as we have already studied. अभी primary economic activity होते क्या है, जो nature पे depend करते हैं. Okay, so they are the extractions of natural resources. वो raw materials बनते हैं किन के लिए? Secondary economic activities के लिए. Okay, so secondary economic activities are dependent on primary economic activities for their raw material. So natural calamities affect most of the primary activities. In developing countries, very large proportion of the population is engaged in primary activity. लेकिन developed countries में ऐसा नहीं है. developed countries में लोग ज़्यादा से ज़्यादा secondary और tertiary में engaged है and less in primary. Now there is next exercise, question number 7. There is an outline of world map which is given and you have to mark all these places. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉगर बैंक है, लंबरिंग इन एशिया है, एनिमल हस्बेंड्री इन ऑस्ट्रेलिया है, एरियाज अंडर एग्रीकल्चर इन यूरोप है, माइनिंग इन अरेबियन सी है एंड फिशिंग इन साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन है. तो यहाँ पे ठीक से देखो, सारे डिनोशन अलग अलग डिज़ाइन से किए हुए हैं. यू जस्ट हैव टू राइट द प्रॉपर इंडेक्स इन द वर्ल्ड मैप अलॉन्ग विद द प्रॉपर डिनोशंस. सो यू कैन सी डॉगर बैंक कहाँ पे है and you can also find out lumbering in Asia. Okay, so it is carried out there. So all these things are very much important. Australia में भी आप देख सकते हो, as a C it is denoted animal husbandry area. Okay, now next is question number 8. Given below is the data about the continent wise employment engaged in primary economic activity in the year 2018. Draw a suitable diagram to represent this
डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंट्स दिए हैं, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और उनके जो परसेंटेज है पॉपुलेशन जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है वो भी दिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले वो जो डेटा है वो हमने बार ग्राफ के मेथड से रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द क्वेश्चंस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इज द लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% से कम कौन से इसमें है। सो द आंसर इज यूरोप, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड है, विच कॉलम कॉन्टिनेंट इज मोर देन 40% पॉपुलेशन एंगेज्ड। अभी 40% से ज़्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट है? सो दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट, looking at the given data, can you arrange these continents in the ascending order on the basis of economic development? अगर प्राइमरी एक्टिविटी में पॉपुलेशन ज़्यादा एंगेज है तो डेफिनेटली उनकी जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कम है। ओके, सो सबसे ज़्यादा विच द मोस्ट एंगेज्ड पॉपुलेशन इज सीन इन अफ्रीका। सो अफ्रीका की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सबसे कम है। सो the ascending order will be as follows: Africa, Asia, Australia, South America, North America and Europe. So this is how the arrangement will be regarding the continents in the ascending order for the economic development. So this is all about the exercise of lesson number 4, that is the primary economic activity. The whole exercise is solved. So still, if you have any queries, you can comment me in the comment section. Thank you for watching. Do subscribe the channel.